So till now we have discussed about the diseases of eye. So कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि based on the diseases of the eye. So these all the three problems they are from your textbook. Okay. So first one is what? Focal length. So the reading spectacles have a person for reading spectacles have for a person for whom the least distance of distinct vision is 50 centimeter. मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं कि also calculate power of the lens. इसको मैं थोड़ा सा यहां पे ऐड कर देता हूं. हाँ, सो देखो इस पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, दिस इज योर 25 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? इट इज हिज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50 एंड व्हाट इज द नॉर्मली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? 25. इट मीन्स सपोज इफ आई एम दैट पर्सन, इफ आई होल्ड ए बुक एट a 25 centimeter, I cannot read it. Okay. If I hold it at a distance of 50 centimeter, then I can read it clearly. Now what is the function of the spec and what is this problem? The problem is hypermetropia. So obviously he has to use a lens of having positive focal length, that is convex. Now the question is what is the function of the lens? That is the convex lens you are using. Convex lens का function यही है कि whatever the object you will place at 25 centimeter. देखो तुम्हारा आँख का प्रॉब्लम क्या है कि तुम 50 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसको क्लियरली देख पाओगे, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे नहीं. लेकिन हमारा काम क्या है? हमको तो ऑब्जेक्ट 25 पे ही रखना है. तो लेंस क्या करेगा कि अगर तुमने वो लेंस को लगा लिया आँख पे, तो लेंस क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट तुम 25 सेंटीमीटर पे रखोगे उसका एक इमेज बनाएगा 50 सेंटीमीटर पे, और उस इमेज का फाइनल इमेज बनेगा हम लोगों का आँख पे. So we can see the object clearly. So the thing is कि whenever you will place the object at 25 centimeter, उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? 50 सेंटीमीटर. वही तो लेंस का काम है. फिर उस लेंस का फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे, ठीक है. So what is the object distance for you in this problem? So object distance u will be minus of 25 centimeter. एंड ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में है तो इमेज भी सेम साइड में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर निगेटिव है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा? निगेटिव ही होगा. सो दिस इज v इज इक्वल टू व्हाट? v इमेज शुड बी फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ minus 50 centimeter. सो द फॉर्मूला इज 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by minus 50 minus 1 by minus 25 is equal to 1 by f. So 1 by f equal to minus 1 by 50 plus 1 by 25. So this is 25 is the LCM will be 50. So it will be minus 1 plus 2 is equal to 1 by f. So 1 by f will be equal to 1 by 50. So it will be f, the focal length will be equal to plus 50 centimeter. So you got the focal length of the lens should be equal to plus 50 centimeter. And what should be the power then? Power is nothing but reciprocal of the focal length. But यहाँ पे condition क्या था कि focal length has to be expressed in meter. So it will be 1 divided by 50 सेंटीमीटर को मीटर पे लाने से उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 1 by 50 is equal to 1 by 50 by 100. So it will be 100 by 50. So the power will be plus 2d. So whatever the lens the person will use, or not whatever, the convex lens that the person will use must have a focal length of 50 centimeter and the power will be equal to plus 2 diopter. What is the second one? The far point of a myopic person. So this one is based on myopia. The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. देखो हम लोगों का जो नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी. उसका फार पॉइंट क्या है? 80 सेंटीमीटर. मतलब ही कैन सी एन ऑब्जेक्ट विच इज लोकेटेड एट 80 सेंटीमीटर. उस 80 सेंटीमीटर से अगर दूर पे है ऑब्जेक्ट
तो वो आदमी को कुछ नहीं दिखाई देगा। तो हम जो लेंस यूज करेंगे मायोपिया को हटाने के लिए, वो लेंस क्या होगा? कनकेव लेंस होगा, ठीक है। और उसका काम क्या होगा? देखो, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उस इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसका उसका इमेज कहाँ बनाएगा? वो 80 सेंटीमीटर पे बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द concave lens to correct the myopia disease. Okay, now the question is, when you are solving the problem of myopia, then where the object will be there? Object will be at infinity, and you know that if the object is at infinity, then the final image is formed at focus. It means in this case, if the final image is formed at 80 centimeter, it means that your focal length of the concave lens is must be or equal to 80 centimeter. I am repeating this once again. That is, this person is suffering from myopia and he can see up to a distance of 80 centimeter only. What is the far point of a normal eye? That is infinity. मतलब उसका क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस 80 सेंटीमीटर से दूर रखोगे तो उस पर्सन को कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब हम जो लेंस यूज करेंगे वो लेंस क्या काम करेगा? जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसका इमेज बनाएगा कहाँ पे? 80 सेंटीमीटर पे। और हमें ये चीज मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट इन्फिनिटी, देन योर इमेज विल फॉर्म एट फोकस। इमेज कहाँ बन रहा है? 80 सेंटीमीटर पे। तो लेंस का फोकस क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द पावर? क्वेश्चन इज अबाउट द पावर. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन. What type of lens you are using to correct myopia? You are using concave lens. So what is the focal length? Focal length will be minus of 80 centimeter. Okay. So what will be the power of the lens? Power of the lens will be 1 by f is equal to 1 by minus 80. You have to convert it to meter. Cancel, cancel. So it will be minus of 10 by 8. So this is minus 5 by 4. So the answer is minus 1.25 diopter. So what is the power of the lens that you have to use? That is minus 1.25 diopter. Okay, done. So the third problem, that is already similar to the first problem, but we will do it now, the third one also. So read the question. Question number 3. क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पे? देखो, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर. हम लोगों का नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है? 25. उसका कितना है? 75. तो जो लेंस यूज करेंगे हम लोग वो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा? 75 में. तो यू यहाँ पे कितना है? माइनस 25 सेंटीमीटर. फी कितना है? माइनस 75 सेंटीमीटर. द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू कैलकुलेट द पावर. To calculate power, you first calculate focal length. So 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. It is minus 1 by 75 minus 25. So it will be minus 1 by 75 plus 1 by 25. इन दोनों का LCM कितना होगा? 75. So minus 1 plus 3. So focal length 1 by f will be, this is question number 3 का solution. हाँ. So 1 by f will be minus 2 divided by 75. So f will be or equal to minus 75 by 2. So this is keep it in fraction, minus 75 by 2 centimeter. You have to calculate power. Oh, this is not minus, it will be plus. So power is equal to 1 by f, that is 1 divided by 75 by 2. ओके, इसको सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर पे है, ये सेंटीमीटर पे है, हाँ. सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 75. तो इसको मीटर पे कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. सो डिवाइड बाय 100. सो 100 विल गो टू द अपस्टेयर. सो इट विल बी 200 बाय 75. 25 इंटू 3 8. तो 8 by 3 कितना होगा? 3 2 जा 6 2 0. 3 2 2 0. Then 3. So the power of the lens will be or equal to 2.67 D. So here to read the book clearly, the person has to
use a lens having the power is equal to plus 2.67 diopter. Okay, that is the requirement. So these are the three problems based on the eye. Okay, in our assignment we have put some problems, try to solve it. The problems are like this only. Okay, so as I have already told you, now one thing that we have to discuss directly from your NCERT textbook, that is the formation of primary rainbow and the secondary rainbow. Okay, so first we will discuss about the primary rainbow and then we will go for the secondary rainbow. Okay, I will simply draw the diagram and I will try to explain how the rainbow is formed. You write a note based on primary rainbow as well as the secondary rainbow. So I will simply explain with the help of a diagram. So primary rainbow. First tell me what is the shape of the liquid drops. Small liquid drops का shape कैसा होता है? If you just go for it, these are the shape of the liquid drops. They are normally what? Their shape is just like a prism. Okay. So what happens in a primary rainbow? Let us consider a liquid drop. Suppose ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं, but वो actually क्या होता है? It is like a prism. So when white light will enter, then it will be splitted into 7 different colors. Okay. So from the sun, suppose the sunlight is entering at certain angle. So this one is the sunlight. So I have told you that the liquid drop, they are normally like this. So it will be splitted into how many colors? It will be splitted into 7 different colors. Okay. So the violet color, it will be splitted. It will deviate the most, and the red color, it will deviate the least. So this one is the red color, and this one is suppose say the violet color. Okay. So what phenomena is taking place here? Here the phenomena taking place is dispersion, or you can say refraction. Okay. But at this point, total internal reflection will take place. So the first, what phenomena is taking place in the formation of rainbow? The first one is refraction, and the second one is total internal reflection. Okay, जब total internal reflection होगा, तो ये red color of the light, it will travel in this direction. And the violet color, it will suppose say travel in this direction. Okay, one is the red color and another one is the violet color. थोड़ा सा इस पे मिस्टेक हुआ है. It will go like this. Let us try to redraw the figure. This is the sunlight. Red color, violet color, red, violet. Move like this. It will move like this. Okay, red color and the violet color. So the violet color of light, this is the refraction, and this one is, you can say, this one is the total internal reflection. This one is the total internal reflection. So when the light rays will come out, it will come out at certain angle. This is the red and this one is the violet. Okay, from the calculation we can say that the violet color, it suffers an angle of 40 degree. Okay, and the red color, it suffers an angle of 42 degree.
This is the sunlight once again. This is the violet. This one is the red. Red color, it will travel in this direction. This is suppose say the violet color, okay? These are nothing but simply diagrams. तुमको खाली याद रखना पड़ेगा, this is violet, this one is red. So the violet color of light, it will travel in this direction, and the red color of light, it will travel this direction. What is the angle made by the violet? This one is 40 degree. And what is the angle made by the red color of light? This diagram is available in your textbook, and this angle is equal to your 42 degrees. So violet color of light is making an angle of 40 degree, and red color of light is making an angle of 42 degree. So in between 40 and 42, what is the angular separation? It is 2 degrees. So all the other colors, it will be in between this region. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So बाकी जितना भी 5 colors है, ये इन दोनों angle के बीच में आ जाएगा, ठीक है? So in the rainbow, first thing that is happening is your refraction. Then at this interface, the phenomena is total internal reflection, but at this surface the phenomena taking place is again refraction. So the first refraction, then total internal reflection, and the third one is refraction. Okay, now let us try to find out the complete rainbow. Okay, the formation of complete primary rainbow that is given. The first figure is the sun rays incident on a water drop get refracted twice and reflected internally in the drop. Number B, that is given in your textbook, is Endler's view of internal reflection and refraction. That is the second one is your Endler's view, but that is the formation of primary rainbow. And what happens in case of secondary rainbow? So in secondary rainbow, the total internal reflection, it takes place for 2 times. Acha. So before drawing the secondary rainbow, let us draw this is figure A and this one is the figure B. Let us draw the figure B from the textbook itself. So in the atmosphere, how many liquid drops will be there? Infinite number of liquid drops. So let us draw 2 liquid drops. One is this one and another is suppose this one. So the sunlight from the sun, it will enter at the 2 liquid drops, this one and this one. Okay, they will strike at somewhere at this point, this one and this one. Then total internal reflection will take place, this one. Okay, how many colors of light you will get at this point? You will get 7 colors. At the top we will be having violet and at the bottom we will be having the red. Okay, so from here, suppose this is the violet color of light and this is suppose say the red color of light. From here, this one is suppose the violet color of light. So this is the violet, the 40 degree angle, violet color upper mein hai. This is red, this is violet, so this one will be violet, this one will be red. So here this one will be violet, this one will be red. Here for this one will be the violet color and this one will be the red color. Okay, so if you are looking at the eye drops, if you are looking at the liquid drops, that is the rain drops, not eye drops, suppose in this direction, this is the eye here, then you will be able to see this violet color and the red color, and in between the violet and red color, this is violet, this is red. So in between the violet and red colors, how many colors will be there? 7 different colors will be there. Okay, this violet color is making an angle, this is along the direction of the sunlight. Okay, this violet color is making an angle of 40 degree and this red color is making an angle of
42 degree. Okay, so you will be able to see the 7 different colors. This is the formation of primary rainbow in extended form. Actually, you have to understand with the help of this diagram only. Now, what happens in a secondary rainbow? So secondary rainbow, in secondary rainbow, total internal reflection that will happen is for 2 times inside the drop. Okay, let us check how it happens. So from the sun, suppose the sunlights are traveling in this direction. So these are nothing but, this is the sunlight and this is the sunlight here. Okay, so here the light ray will bend in this direction, then total internal reflection will take place at this point. The total internal reflection at this point, another total internal reflection will take place at this point, and finally the light rays will come out. So which light ray will deviate more? As you already know, violet will be the least and red will be the highest. So here at this point, this is suppose the red color of light as per the diagram, and this one is suppose say the violet color of light. So this is red and this one is the violet. Okay, similarly in this drop also, this one and this one, this is one total internal reflection, this one is the another total internal reflection. Okay, so they will this one and another one will be this one. So this is what? This is the red and this one is the violet. Okay, you have to remember the diagrams. This one is suppose say the plane. This is the position of our what? Position of the eye. So here the red color is making an angle of 50 degree and the violet color is making an angle of 53 degree. In case of primary rainbow, the violet color is making a lesser angle with respect to the sunlight, but here in case of secondary rainbow, the violet color is making an angle higher, greater than the angle made by the red color of light. Okay, this is the difference between primary and secondary rainbow. In case of secondary rainbow, the intensity is less. Why intensity is less? Because how many times for how many times the reflection is taking place? At this point for the first time, at this point for the second time. And you already know that in reflection, some portion of the refraction also takes place. ऐसा नहीं कि 100% of the light will be reflected back. So some portion of the light will be absorbed and it will be transmitted to the another media. As a result of which the intensity of the light ray will be reduced. So you simply write few lines about primary and the secondary rainbow and their differences. Okay. So this is the primary, secondary, make a notes. So यहाँ पे और अभी फिलहाल कुछ नहीं है. So let us try to solve the problems from the exercise. So let us take question number 9.1. A small candle 2.5 centimeter in size. A small candle 2.5 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. So whenever the mirror is given, you try to simply draw the mirror, okay? Then it will be easier for you to solve the numerical. So let us first draw the concave mirror. Concave mirror is also known as what? Concave mirror is also known as converging mirror. In this chapter, we got a lot of formula to solve the numericals. So you do one thing, you try to write down all the formulas in a separate copy. Acha, so question number 9.1. What type of mirror? That is a concave mirror. So simply you draw a concave mirror, nothing else. Okay? Give the pole, give the somewhere focus, give the center of curvature. Okay? So is placed 25 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36. So 36 is the
रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो आर इज गिवन एज 36 सेंटीमीटर। प्लस होगा या माइनस होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? अगर आर 36 है तो फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो ये होगा 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 27 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और हमें ऑलरेडी मालूम चल चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस का बीच में है तो इमेज विल फॉर्म इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब हम लोगों का जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 36 सेंटीमीटर। अगर 36 से कम आ गया तो इसका मतलब हम लोगों का आंसर इनकरेक्ट। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, देन इट विल बी इफेक्टिव देन। सो u इज गिवन एज 27 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, इधर देखेंगे। ठीक है, सो गिवन u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज माइनस, सो u इज गिवन एज minus 27 centimeter. R is given as minus 36 centimeter. Focal length is given as R by 2. So minus of 36 by 2. This is minus 18 centimeter. ठीक है? अच्छा रुको, क्वेश्चन तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगा? Describe the nature size of the image if the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? ठीक है, चलो एक एक करके सारा सब करते हैं हम लोग। ठीक है, फोकस मिल गया, यू मिल गया, और क्या चाहिए? और हमें चाहिए अभी v। ठीक है, और एक चीज दिया हुआ है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 2.5 सेंटीमीटर। मैंने इसको प्लस लिया है। क्यों हम लोगों ने इसको प्लस लिया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यू को माइनस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी माइनस ले लिया, सी पोल का लेफ्ट साइड में है। फोकस भी तो अब माइनस ही होगा, अब भी माइनस ही आना चाहिए। अगर माइनस नहीं आता है तो इसका मतलब हम लोगों ने कहीं पे तो गड़बड़ी होगा सोल्यूशन पे। तो देखो फॉर्मूला क्या था मिरर का, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v जो हमें निकलना है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, 1/f माइनस u, सो माइनस 1/18 लिख दिया फोकल लेंथ। ओके, अब u लिखना है तो ये कितना होगा? माइनस ऑफ 27, सो माइनस 18 प्लस 1/27। इन दोनों का एलसीएम होता है 54, तो इट विल बी -3 प्लस 2, तो दिस इज माइनस 1/54, 1/v, तो v हो गया हम लोगों का -54 सेंटीमीटर। आंसर माइनस आया है, इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही होना चाहिए। 54 आ रहा है जो कि 36 से ग्रेटर है, इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था कि स्क्रीन को कहाँ रखोगे? तो स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना पड़ेगा। सो इमेज स्क्रीन हैज टू बी प्लेस्ड। अगर स्टेप बाय स्टेप आंसर पूरा नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, तो स्क्रीन हैज टू बी प्लेस्ड at a distance of 54 centimeter, 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये भी बोलना पड़ेगा कि फ्रंट पे रखोगे या बैक साइड में। सो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, चलो ये हो गया। उसका बाद क्या बोला है कि उसका नेचर क्या है? नेचर कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नेचर के लिए मैग्निफिकेशन। ये मैंने बोला था क्लास में कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आया तो इसका मतलब इमेज विल बी रियल, और पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इक्वल टू माइनस ऑफ v/u। लेंस में ये फॉर्मूला था प्लस v/u, तो माइनस v/u माइनस 54 माइनस 27, तो हमें मिल गया मैग्निफिकेशन -2। इसका मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो इमेज इज रियल एंड उल्टा, इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा फिर से फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज कितना होगा? तो फिर से मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आता है कि m इक्वल टू h डैश बाई h। मैग्निफिकेशन कितना मिला? -2। h डैश हाइट ऑफ द इमेज जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और h का वैल्यू कितना था? 2.5 उधर दिया हुआ है 2.5।
तो एच डेस का वैल्यू हमें मिल गया -5 सेंटीमीटर। -5 मिला तो इसका मतलब क्या है, इमेज इज इन्वर्टेड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा -5। तो इमेज जो फॉर्म होगा वह समवेयर यहां पे फॉर्म होगा। इसको मान लो ए बी, तो इसको मान लो बी डैश ए डैश। ये अगर है 2.5 सेंटीमीटर तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, सो द हाइट और साइज वट एवर, सो हाइट ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका बाद और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ यू मूव द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मिरर देन वेयर द स्क्रीन हैज टू बी मूव्ड, ओके। एज यू ऑलरेडी नो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल फॉर्म एट फोकस, when the object will be in between infinity and center of curvature, image will form in between focus and center of curvature. If the object is at center of curvature, image will form at center of curvature. इसका मीनिंग क्या है, देखो ऑब्जेक्ट जितना ही धीरे धीरे मिरर के पास जाएगा, इमेज भी धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मिरर से वो दूर भागने लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव टूवर्ड्स द मिरर देन स्क्रीन हैज टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। सो if the object is moved towards the mirror comma screen has to be moved away from the mirror, ठीक है। तो ये से the way we have solved the numerical, you also have to solve this type of numerical in this way, okay, step by step, done। And if possible try to draw a ray diagram, not ray diagram, simply a diagram involving the mirror, object and the image, then it will be easier for you to give the signs whether it will be plus or minus and where it will be, and you will be able to also know about the answer कि अगर आंसर कभी रॉन्ग आ गया तब भी तुमको मालूम चलेगा कि आंसर रॉन्ग हुआ है, अदरवाइज it will be difficult for you to judge कि whether the answer is correct or incorrect, okay।